Chapter 8, and the name of the chapter is body movement. Body movement. And in this chapter, what we have to do? We have to study exercise question today. Exercise के questions करने हैं. Page number is 78, and the question is match the column. Match the column. In this match the column, what we have to do? Let's see. Upper jaw will match with is an immovable joint. Upper jaw किसके साथ जाएगा? Is an immovable joint. Upper jaw is immovable in nature. वो move नहीं करता. Next is fish. Fish have fins on their body. Fins present होता है जो balance करता है body को. Ribs will match with Protect the heart. Yes, protect the heart. So ribs only protect heart or some other thing also? Lungs. Yes, lungs. पूरे lungs से आवाज आ रही है. So energetic, very good. Snail. What will be the answer of snail? So very slow movement. Next is cockroach. Cockroach has an outer skeleton. Exoskeleton present होता है. B. Yes, B has an outer skeleton. Okay. Yes, now ma'am. question 4 we have to do. Question 4. Let's see what is question 4. Answer the question. This is a question answer which we have to do. Question first is given. What is ball and socket joint? Ball and socket joint के बारे में पढ़ना है. What is ball and socket joint? कोई बताएगा? What is ball and socket joint? Ball and socket joint is a joint which move 360 degree. Which can move in all directions. ठीक है, पूरे सर्कल में आप मूव कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहां भी आप घुमाना चाहते हैं. लाइक योर हैंड इज हियर. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. योर लेग आल्सो. लेग में कौन सा रीजन? पेल्विक गर्डल और थाई के पास जो बोन अटैच है वहां पे कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन आंसर टुडे. क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन 4 का पहला आंसर ball and socket joint. Okay, are you all ready for writing the answers? Yes, ma'am. Energy level is very down. Once again, speak up. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो शरीर पर कोई कपड़ा है. Yes, ma'am. Okay, let's see. Fourth का first. Ball and socket joint. हम इसको करेंगे. No, each and every question you have to do in notebook. Question first से लेके fourth तक सारे questions आपको notebook में करने हैं. कल भी मैंने कहा था कि exercise question आपको notebook में करना है. कॉपी पर करेंगे. Notebook copy ही बोलते हैं. Let's write a joint in which rounded end मैम हम पहले का आंसर बताओ मैम. rounded end of one bone fit into cup-like मैम ये हम लोग को बुक में तो नहीं है. end of. मैम ये कौन सा पेज नंबर का है? बेटा ये क्वेश्चन आंसर है. क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन 4 का फर्स्ट. लिखिए इसको. डोंट सर्च इन योर बुक.
मैम मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है मैम, दूर पे भेज दीजिएगा। बुधाए भी है, ताकत भी है, ऐसे भी भूत लग जाता है। Does it allow movement in all directions? Directions. Write down. Okay. A joint in which rounded end of one bone fit into मैम अब जो cup-like ends of लिखवा रही है another bone. मैम उसे Does दूर it पे भेज allow दीजिएगा। movement in all directions? Instead of wasting time, it's better to write in your notebook, please. Please, Wait. Let me mute to everyone. Otherwise, all will disturb throughout the class. राइट के आगे क्या लिखे हैं? A joint in which rounded end of one bone fit into cup-like end of another bone. Written. लिख लिया? Okay. Next question, which is which of the skull bones are movable? Which of the skull bone are movable? Can anyone give the answer? Which of the skull bone is movable? Yes. Now give the answer. लोअर jaw. Lower jaw. So नो right answer B. B. Lower jaw. मैम इस साइड लोअर jaw. Lower jaw. सर मैम ये 4 ही का आंसर है, लोअर जो। 4 के B का आंसर है लोअर जॉ। 4 का A यहाँ है, B यहाँ है। 3 क्वेश्चंस है 4 में। Third question which is given here. Why can elbow not move backward? Why can our elbow not move backward? Which kind of joint is present in elbow? मैम hinge joint. Hinge joint, yes. Which allow movement hinge only joint. in one direction. सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसे पीछे की तरफ वो मूव नहीं करता। तो दो मैम पीछे देखेगा तो टूट जाएगा। Fourth one is completed. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fourth C. Elbow. Our elbow has hinge joint. Which allow movement only in one direction.
Only in one direction. If I'll take side, dear, then who is going to write the answer? Tell me. Only in one direction. Like hinge door. Written? Yes, ma'am. मैम हिंज के बाद आप क्या लिखे? डोर. Door. DOOR. Yes, ma'am. Written. I'm done. Door. Okay. Yes, Now all the questions, जितने भी questions थे, Yes, ma'am. 70, which page number? 78 पे, वो सारे के सारे आपको copy में करने हैं. Is it clear? Speaking. Yes, ma'am. पेज नंबर पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, वेदर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम क्वेश्चन आंसर्स, सारे के सारे क्वेश्चन Yes, ma'am. आपको कॉपी में लिख. Ma'am, side. Side, please. Inside page. Okay, ma'am. मैम जो यहाँ पे कीवर्ड है मैम उसका मीनिंग कहाँ है? Ma'am. Written? Give Yes, the heading ma'am. keywords. Heading दीजिए keywords. Now we are going to write keywords. Okay? So keywords. Yes, ma'am. Keyword. First one is backbone. Back. Can anyone give the answer of backbone? Backbone has Backbone is the bone that present in the made of 33 button back. The column of 33 small bones called vertebrae through which spinal cord मैम कीवर्ड ग्रुप पे भेज दीजिएगा. spinal cord runs. Next one. Next is muscles. What is muscle? It is a soft tissue That protect bones. which help in movement. It is a soft tissue found in animal, That helps in movement of bones. found in मैम अब तो वीडियो नहीं आ रहा है. animals, found in animals, which help in and helps in. It is a soft tissue found in animals that help in Movement of bones.
Movement of ball. Next one. Next is ball and socket joint. Joint which allow. Yes. हम इन क्या उधर और कुछ नहीं लिखे मैम, एनिमल्स ही ना लिखे हैं। Yes, yes. Found in animals that help in movement of bones. मैम जॉइंट के आगे क्या लिखेंगे? Joint which. रुकिए मैं इधर लिख दे रही हूँ. Joint which. Allow movement in all directions. मैम सर्किट कर दिया है। Example. Joint present between pelvic bone and thigh. Joint present in wrist. And okay. Written. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे मारो 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 मुझे मारो। The external skeleton. After animal, I'm writing here. ऊपर लिख रही हूँ ताकि आपको दिखे एनिमल के बाद.
Okay, once again, I'm repeating this. Outer skeleton, the external skeleton that protect and support animals' body. Example, exoskeleton present in snail. I have written here, snail likha hai, snail, snail, comma, cockroach. Snail, cockroach, crab, scorpion, किसी में भी क्या हो सकता है, skeleton present हो सकता है. Housefly, तो कोई भी आप एक एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी, व्हाट वी हैव टू राइट, ब्रिस्टल्स. ब्रिस्टल्स, ब्रिस्टल्स. Present in hair-like structure. Here I have written tiny hair-like structure present in earthworm for its movement. Movement के लिए bristles present होते हैं earthworm की body पे. Okay. Next is pelvic bones after bristle. Pelvic bones. Where it is present? It is present in lower part of the body. Abdominal region में ये present होते हैं. कौन? Pelvic bone. Okay, it is present in lower part या abdominal part. Lower part of body, also called as hip bone. It's not visible. Let me write up. Lower part
hip bones. Okay. Next is cartilage. After Bristol, what we have to write is cartilage. And today I'll check your diagrams whether you all have drawn or not. So be ready for that. Cartilage. It is a soft tissue which can be bent easily. Okay. Once again, I am repeating cartilage. It is a soft tissue which can be bent easily. Example is nose tip. आप ear pinna भी लिख सकते हैं. EARPINNA, ear pinna. Now one by one, let me show. Please show me your homework. Copy it down and afterwards show me your homework. एग्जाम्पल के बाद क्या लिखी? Example is nose tip. Nose tip. मैम पेल्विक बोन का पार्ट यहाँ से कहाँ लिखी है? ऊपर. Lower part of the body, it is also called as hip bone. Done? Okay, now one by one, please show me your homework. Let me see how many of them are doing. मैम सॉरी, होमवर्क नहीं हो पाया, कल हो जाएगा मैम. Every day you people are saying sorry. Every day. Whenever I used to check your homework, same excuse you all are giving every day. Sorry, नहीं हो पाया. अब कौन सा क्राइसिस आ गया भाई? आप तो घर ही पे हैं. ऐसा भी नहीं है कि स्कूल में हैं और घर गए तो कुछ और हो गया. शिवांगी, can you show me your homework? मैम नहीं बना. Krishna Yadav is here. Can you show me your homework, Krishna Yadav? मैम आपको मैं लीव दिखा देती हूँ, मैं पहले नहीं दिखाई थी. Leave I'm not going to see. While see leave, that is a part of chapter 7 no? Chapter 7 मैं देखूंगी कि chapter 8 देखूंगी, ये बताइए. Next, Krishna Yadav. I'm not done homework. Very good बेटा, very good. Keep it up. ऐसे ही करते रहिए. मैम मेरा देखिए. Shivesh. Next is Shivesh. Can you hear me, Shivesh? Yes ma'am. Homework you have completed? No. Have you drawn the diagrams which I have given? मैम दिखा. No. Camera is off, I think. मैम दिखा. Okay, next is Anshuman. Yes ma'am. Done? Yes मैम दिखा है. Yes, yes. Yes ma'am. Have you done your homework, Anshuman? Yes ma'am. Can you show me your homework from there? Yes ma'am. Show it to me now. Quickly, don't waste time. Shivam Gupta, get ready with your homework if you have done then. Shivam Gupta. किया है आपने? मैम. Yes ma'am, मैम दिखा. No, ma'am. No, it's not visible.
या दिख गया. चलिए संजीत सिंह, कैन यू हियर मी? हैव यू डन द होमवर्क? आदित्य सिंह, नेट नहीं चल रहा था. वेरी गुड. आदित्य सिंह, कैन यू हियर मी? आदित्य, he's listening but not giving the answers. Aditya, मैम वो कार्टिलेज में मैम कैन बी के बाद क्या लिखी है? bent easily. Ambuj, Yes, ma'am. show me your homework. Ambuj, Ma'am, दिखा. मैम कल आप होमवर्क की थी. Anuj Kumar, Anuj Kushwaha, Anushka Kushwaha, Arushi Giri. If anyone has done their homework, please show it to me, please. It's my humble request to show homework those they have done. Just yeah, please show it to me. Because one by one, it's impossible for me to ask. 22 participants are there. Many of them has left also. Very good. Avinash Singh. Can you मैम एग्जांपल में मैम आप क्या लिखी है? लास्ट वाला, सबसे No लास्ट shape. वाला. Avinash Singh, show me your homework. Avinash. मैम हो गया डन पूरा. Now today's homework is to draw. Homework note down कर लीजिए. Figure 8.14. मैम क्या? Figure 8.14 you have to draw. मैम Figure मैम कल 8.17. आप होमवर्क क्या दी थी बनाने के लिए? 8.1, 8.2. मैम 8.14 आप दे चुकी हैं मैम. Once again, I'm giving those they have not drawn, they can redraw it again. Yes, ma'am, एक बार दे चुकी थी. 8.17 note down करिए. 8.17. Eight point 24. 8.24. This diagram. मैम showing it from here. 8.2. This one where I have kept my this hand. I'm showing 8.24. Here it is. These two diagrams you have to draw. ये दोनों diagrams. ये snake and this diagram. मैम This diagram- 8.24, 8.25. Yes, and the snake one. 8.25. मैम चैप्टर नंबर किस बनाना है? Yes. मैम चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर आप कीवर्ड भेज दीजिएगा. Who is this? Anushka Kushwaha. मैम मैम अभी कल मेरा हुआ है. आप क्या मैम homework दी थी? 8.24 और मैम 8.5 ना उस पेज का. Yes. Now listen, tomorrow I'll take the test of this chapter. Test लूंगी मैं कल इस chapter का. मैम पूरा बता दीजिए. Yes, chapter 8 का test होगा कल. मैम क्वेश्चन आंसर तभी. क्या कर लाना है? मैम कैंसिल लेंगी. मैम होमवर्क क्या कर लाना है? I'll send in group. मैम क्वेश्चन आंसर का भी टेस्ट होगा. जी एवरीथिंग, हर चीज बुक के अंदर जितना भी जो भी पढ़ाया मैंने, टाइप्स ऑफ बोन, पार्ट ऑफ बोन, जॉइंट, स्केलेटन, टाइप्स ऑफ जॉइंट, सब कुछ. मैम कैसे लेंगी? मैम ओरल. ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. कीवर्ड सेंड कर दीजिएगा. ठीक है, सेंड कर दूंगी आपको, परेशान मत होइए. मैम कल आप होमवर्क